all of you know that there are so many natural disasters takes place in our surrounding, like your flood, your earthquake, a drought, or any type of a disease is there. And due to these natural disasters, a loss of the property as well as the human life also takes place. And there are sometimes post effects can also be seen. The post effects can also be seen after the natural disaster, like in the flood. There are a lot of the disease which can be taken place after the flood. Like that in the Hiroshima and Nagasaki, when there was a bomb explosion was there. Due to that, what happened? The person who are coming in the next generation, they are also suffered from that disease or any type of the disease. Means once there are some type of the natural disasters are there, due to that, there are the post effect also takes place, like your plague or any type of the disease, skin cancer, mental stress, etc. So today we will start our topic that why do we fall ill? We fall ill as the name suggests. It is due to our personal health, economic, means financial, society, and mental. We can say that कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें जैसे पर्सनल हेल्थ है, पर्सनल हेल्थ की वजह से, इकोनॉमी की वजह से, सोसाइटी की वजह से और मेंटल की वजह से ये सारे के सारे आपका एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं टू कीप अ पर्सन हेल्थी. Healthy means not a person who is thicker in the size, जो बड़ा साइज में वो मोटा वाला साइज में उसको हम हेल्दी नहीं बोलते. Healthy means a state of physical, mental, and social well-being. What does these three words mean? What are the meaning of these three words? Physical, as we have suggested, physical means the person should be disease free. The person of disease free means we do not have any type of the disease. If a person is disease free, means we do not have any type of the disease, we can say that he or she will be well-being. Well-being in which state? Physical state. कि उसको कोई डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपकी क्या कहते हैं बीपी की प्रॉब्लम नहीं है, हेडेक नहीं है, फीवर नहीं है, कफ नहीं है, कोल्ड नहीं है, तो हम कहेंगे कि वो फिजिकली क्या है फिट, एंड ही इज एबल टू डू डिफरेंट टाइप ऑफ द वर्क व्हिच कम्स इन हिज डेली लाइफ. मेंटली मींस नो स्ट्रेस, नो टेंशन. What does it mean? No stress, no tension means physically or mentally means mentally. He has not any type of the tension in his mind. जैसे students होते हैं उसको रहते हैं मेरे marks कितने आएंगे, teachers सबको रहते हैं कि how the students will behave, how my child will behave, what will happen in the society. So many things are there which comes in the mind, which makes mentally stress or mentally tension in the mind. And due to this mentally stress or the mentally tension, a person who is physically fit sometimes will not remain physically fit. इसकी वजह से कई बार वो physically fit भी नहीं रहता. और social well-being means behavior towards community. Behavior towards community. How he behaves with the community. The community means the people surrounding himself. और उसके चारों तरफ कौन कौन से पर्सन है, उनका बिहेवियर कैसा है, वो उनके साथ ट्रैवल नेचर का है, सॉफ्ट हार्टेड है, काइंड नेचर्ड है. तो यदि काइंड नेचर है तो देयर विल बी स्ट्रेस एंड द टेंशन विल बी लेस, और देयर मे नॉट बी टेंशन और स्ट्रेस, then we will be mentally fit. And if it is mentally fit, definitely due to the diet or other things I will explain later, he will be physically fit. So then we can say that person is your health. उस पर्सन को हम हेल्दी बोलेंगे कब, जो फिजिकली, मेंटली और सोशली वेल-बीइंग होगा, तब उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे, हेल्दी. अब all the organs which are present in our body that are interrelated to each other. So these are interrelated to each other. If a bird person organ is dead,
or not working, that it will also affect the other organs. How? As I said that all the human beings are made up of the cell. Means cell is the fundamental unit of life or smallest unit of the life. When this cell combine together and perform a particular function, then it will be known as your tissue. And these tissue combine together, they will form organs combine together, they form an organ system. And all of you know that there are so many systems out there, like your digestive system, excretory system, circulatory system, respiratory system, reproductive system, nervous system. There are so many organ systems are there which will combine together to living organism, either animals or the human being. All of these combine together living organism. जैसे मैंने कहा कि सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से organ से organ system. If, for example, any organ is not able to compute this, for example, kidney, हम kidney के example लेते हैं. As all of you know that kidney helps in the removal of the waste material from the body in the form of the urine. If due to some reason this kidney is not able to perform the function, what will happen? The undigested food, waste material in the form of the liquid that will be accumulated in the body. Body के अंदर इकट्ठा होता जाएगा. Due to that, it will changes into the poisons, and that poisons will cause the death of the person. ये सबको पता है death of person को कर दिया. अब ये दूसरे organ से तो कैसे रिलेटेड है? If it will move this nitrogenous waste or the waste which comes from the kidney and it is not able to excrete that, तो वो body के अंदर accumulate होगा, it will goes in the nerves. जो आपकी nerves होते हैं, nerves के अंदर जाएगा, in which the blood will flow. So there will be less amount of the blood flow takes place, and due to less amount of the blood flow, the kidney lungs are not able to do the process of respiration. Heart is not able to do the process of the, इसका नहीं कर पाएगा heart आपका पंपिंग नहीं कर पाएगा, तो चारों सभी को ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, और जब तक सबके पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी विल नॉट एबल टू डू द फंक्शन. अदर जैसे हम कि नर्वस सिस्टम है ब्रेन, व्हिच इज आल्सो नोन एज, यस बेटा, यस, brain, which is also known as controller of the body. So हम क्या बोलते हैं? Controller of the body बोलते हैं. Why it is known as controller of the body? Because it controls all the activities which is present in the human body. Jैसे I am just using my hand to write on the board. It is under my brain control. If I am walking in the class or I am talking to you, it is also under the control of the body. If this is not able to do what? If this brain is not able to do what will happen? The body parts and the other activities which are related to brain, I am speaking, I am talking, I am walking, writing, running, etc. All these activities which are under the control of the brain will not able to perform completely. और जब completely perform ना करेगा तो उससे पूरी की पूरी body parts पे क्या पड़ेगा? Effect पड़ेगा. What does it mean? All the activities which are done in our body that are interrelated to each other. अब सिंपली सोच लो कि हार्ट ने काम करना बंद कर दिया तो क्या होगा? लंग्स का ऑक्सीजन नहीं दे पाएंगे, लंग्स से ऑक्सीजन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि लंग्स से हार्ट के पास होते हैं, हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक होते हैं. अब जब डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो व्हाट विल हैपन? इट विल वर्क, नॉट वर्क, एंड द पर्सन विल बी डेड. धीरे धीरे उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगा, डेथ ऑफ द पर्सन हो जाएगी. So what is that? All these organs are interrelated to each other. If one will be affected, the other body parts will be affected in the same manner, either directly or indirectly. That is your cells or the how they are interrelated to each other. Now, next is the significance of health. As I told you, health is a state of physical, mental, and the social well-being. He should be physically, mentally, and socially fit. So, what does it mean? Means this health, good health. This plays an important role. If you are having a good health, what will be there? You will be able to do different type of the works. आप different type के क्या कर सकते हो? Works कर सकते हो. And you can do different activities which are generally done in the daily routine. आप सुबह से शाम तक जो जो काम करते रहते हो, यदि आप fit and fine हो, तो you will be able to complete that work.
If you are having a fever or you are having a headache and you will not able to complete your daily routine works, what will be there? So you will say that I am not well. You will say that I am not well, like your grandmother. She is not having the good health. She is not well being. So what will be there? She is not able to do his daily routine works. So we will say that your grandmother or your grandfather or my grandmother, my grandfather, they are not well. Means they are not having the good health. And this good health comes due to your balanced diet. ऐसा नहीं होता बैलेंस डाइट में इसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है ये जो सेल में आपका कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है एनर्जी मिलती है जिससे आपको फैट्स भी लिपिड्स भी एंड प्रोटीन्स all are present in the cell means हमें सेल को ठीक रखना है तो what should we do we should take the balanced diet जब हम बैलेंस डाइट लेंगे जिसमें अंदर हर प्रॉपर अमाउंट होगा चाहे कार्बोहाइड्रेट हो फैट्स हो प्रोटीन विटामिन हो तो हमारा सेल ठीक रहेगा सेल ठीक रहेगा तो टिश्यू ठीक रहेगा टिश्यू ठीक है तो ऑर्गन ठीक है ऑर्गन ठीक है तो ऑर्गन सिस्टम ठीक है और ऑर्गन सिस्टम ठीक है तो आपकी पूरी की पूरी बॉडी क्या है ठीक है तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस हेल्थ इट मींस इफ यू आर हेल्दी means good health so you are able to do different type of the work in your daily life you can explore yourself to a large extent और एक बंदा ऐसा है जो every time he said that I am not well and he is not able to do the work he can do only and only his routine work not to able to explore himself or herself in a society not able to do different type of the work right तो ये हो गया significance of the health अब जो आपका पर्सनल है और जो कम्युनिटी है पर्सनल एंड कम्युनिटी बोथ अफेक्ट योर हेल्थ अब आपकी हेल्थ पे दोनों चीजें कैसे अफेक्ट मैं पर्सनल भी अफेक्ट करता है और आपकी कम्युनिटी भी अफेक्ट करते हैं अभी मैं इकोनॉमी और सोशल के बारे में भी डिस्कस करूंगी तो पर्सनल जैसे पर्सनल हाइजीन डू यू नो अबाउट द पर्सनल हाइजीन to keep yourself neat and clean by washing yourself, taking bath, brushing, combing, taking balanced diet, living in a proper area in which there is a clean environment is there, means in which room you are living or you are staying that should be neat and clean. Or you have to keep yourself personal hygiene by taking a balanced diet so that due to this personal hygiene, you can keep yourself healthy. अपने आप को क्या रख सकते हो हेल्दी रख सकते हो डिजीज फ्री रख सकते हो अपने आप को क्या कर सकते हो प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द डिफरेंट टाइप ऑफ द डिजीज अब व्हाट इज अबाउट द कम्युनिटी हाउ द कम्युनिटी अफेक्ट्स योर बॉडी like that in your community there are so many houses are there garbage collector coming to your house daily and there is a strike or any like we can say that he is suffering from any disease and not able to move in your society for 7 to 8 days what will be there what happened at that time, what will be there? You can tell me. There will be a large amount of the garbage can be collected there, and a foul smell will be there. Flies and the mosquitoes will sit on that, and if these flies and mosquitoes sit on your food, what will happen? They will leave the bacteria in your food. अब जब बैक्टीरिया को अपने फूड में छोड़ दिया and you don't know whether they will leave the bacteria or not. And when you eat that contaminated food, and contaminated means polluted, having any type of not clean उसको contaminated बोलेंगे तो उससे क्या होगा आपका कि सारे के सारे ये जो disease है that foreign substance bacteria will enter into your body and may cause disease in your body like that there is an example as all of you know that in our body WBCs are the WBCs are the body में present होते हैं which act as a soldier of the body. What is the function of these? To kill the bacteria or the foreign substances which enters into our body. The main function क्या है जो soldiers का कि जो bacteria या foreign substances या unwanted substances आपकी body के अंदर enter करके उनको मारने का काम इसका WBC है. ये WBC soldier का काम करता है उनको मारते हैं या भगा देता है कुछ भी कर सकते हैं but in body ये मारते हैं. तो जब किसी वजह से if they are not strong, what will happen? If they are not strong, they will destroy these WBC. जो bacteria आएंगे वो WBC को क्या करेंगे? Kill कर देंगे and cause the disease in your body. Means what does it mean? Your immune power, immunity is not strong. What does it mean?
means you are not taking the balanced diet, you are not having the personal hygiene, you are not taking the fruits, vegetables or milk etc. which boost your immunity. तो ये WBC क्या हो जाएंगे, आपके वीक हो जाएंगे and they are not able to fight the bacteria or the germs which enters into your body and they will cause the disease in your body. ये कम्युनिटी में अब जैसे कोई गांव में रहता है, ग्राम पंचायत में रहते हैं, उनकी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी करके how the clean water will be supplied to the house or how the garbage can be collected. So you can do your also, you can tell your mother they should generate a very less amount of the solid waste so that there will be solid waste management will be there and you can change this solid waste into the manure by digging into a pit and covered with the soil and that will changes into the manure. उस manure का किसी भी पेड़ वगैरह पे use कर सकते हो for the growth of the crops etc. So that is your personal hygiene and the community. कि पर्सनल हाइजीन और कम्युनिटी आपके कैसे रिस्पॉन्सिबल होती है. अब मैंने कहा कि जैसे फूड है, अब हमें कोई भी काम करना है तो वी नीड द फूड टू डू द वर्क. व्हाई? बिकॉज़ फूड गिव अस एनर्जी. अब जो एनर्जी मिलता है और ये फूड हमें कहां से करना है, फूड के लिए हमें क्या करना होता है, अर्न करना होता है. मींस द फादर और द मदर एट योर होम दे अर्न्स द मनी फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड. इफ अ पर्सन इज इकोनॉमिकली स्ट्रांग, एक पर्सन है इकोनॉमिकली स्ट्रांग है एंड हैविंग अ गुड जॉब. एक पर्सन कौन सा जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग भी है और उसके पास गुड जॉब भी है, तो ही कैन प्रोवाइड हिज फैमिली अ बैलेंस्ड डाइट, अ प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड so that their immunity will be strong and they will not fall ill or they will be free from the disease. But instead of that, अब जो इसकी जगह है उसका क्या होगा, मतलब जिसके पास गुड जॉब है, इकोनॉमिकली ठीक है, उनको 2 टाइम की चपाती ही मिलता है, 2 टाइम प्रोटीन मिलता है, that is enough for them. Fruits or vegetables और milk के बारे में उनका छोड़ो, they are not having the so much strong immunity. Understand? समझ में आया? तो उनकी इम्यूनिटी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगी जितनी की होगी जितनी इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग और जिनकी गुड जॉब होगी. यानी इकोनॉमिकली आल्सो गिव्स योर पर्सनल, इकोनॉमी भी आपकी रहती है. अब सोशल, सोशल means in this community or you are living in a society or a village or in your area, there are so many houses are there and this social means behavior towards your community. क्या आपके आसपास में है उसके साथ आपका बिहेवियर कैसा है या उनका आपके साथ बिहेवियर कैसा है. if they are someone having the some rude nature, so you are having the tension in your mind. If you are having the tension in your mind, then there will be mental stress is there and due to mental stress you will not be able to physically fit, physically भी नहीं होगे और mentally भी नहीं होगे और social तो कोई नहीं. So you will not say that you will be healthy. You will be healthy. Understand? That is about the personal and the community affects your health. Individual की health पे कैसे affect होता है. अब difference between disease free and today we will discuss the last topic. Right? Difference between disease free and healthy. Disease free, as the name suggests, means free from disease. Means headache नहीं होना चाहिए. कौन से लाइक headache, fever, fever कह सकते हैं, like that cold, BP, diabetes, etc. Means a person is able to do his or her daily routine work without any using the force. He leniently, smoothly, he can do all the work of his daily life. And you are going to the doctor and doctor use the word good, hence you are having the good health. What does it mean? It is having a different meaning for the different person. जैसे एक example देते हैं, for example musician. एक musician है, he used to play flute. Flute use करता है, play करता है
So what is that? To play the flute, he needs a lot of the air so that he can play flute. तो उसके lungs पे इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो air को fill करे और flute को क्या कर सके, बजा सके, चला सके, उसको play कर सके. If he is not able to do this activity, then he is not having the good health. Understand? सेकेंडली कह सकते हैं कि जैसे फॉर वर्कर जो लेबर होती है वो अपने फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा करता है. इफ ही इज नॉट एबल टू डू हिज फिजिकल वर्क लाइक मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस विद अ लॉट ऑफ द वो कह सकते हैं सामान के साथ, लगेज के साथ मूव करता है, तो वी विल से दैट ही इज नॉट हैविंग द गुड हेल्थ. लाइक दैट आई एम स्टैंडिंग इन द क्लास, I am teaching you. If I am not having the good health, I am not able to speak continuously for 30, 50, 60 minutes, whatever the period is there. So what does it mean? Good health means he can stretch himself or himself in that particular condition without stress on his mind. अपने माइंड पे बिना स्ट्रेस डाले वो क्या कर सकता है, उस लेवल में उसमें क्या कर सकता है, अपना पढ़ा सकता है या अपना काम कर सकता है. जैसे म्यूजिशियन के लिए है, लेबर के लिए अलग है, डॉक्टर के लिए अलग है, सबके लिए इसकी गुड हेल्थ की अलग अलग डिफरेंस मिल जाएगी. बट गुड हेल्थ का मतलब ये है कि he or she means the person will be able to stretch his capability to do the work in his daily life. हो सकता है एक दिन उसको ज्यादा काम करना पड़े और some other day he will do less work, but ये नहीं कि उसको बहुत ज्यादा इतना टायर्ड हो गया, इतना हो गया कि he can do his day's work completely without tired or without the stress etc. तो होगी गुड हेल्थ. और हेल्दी का जैसे गुड हेल्थ का मतलब डिजीज यानी वो अपने काम आराम से करता रहे. हेल्दी का मतलब है फिजिकली, mentally and socially. But it is a stage of physical, mental and social fitness. जो फिजिकली भी, मेंटली भी और सोशली भी क्या होना चाहिए, फिट होना चाहिए. तो उस टाइप के पर्सन को हम क्या कहेंगे, हेल्दी पर्सन. अंडरस्टैंड? इज देयर एनी डाउट रिलेटेड टू दिस? मैम सोशल फैक्टर्स कैसे इफेक्ट करते हैं? सोशल फैक्टर्स का मतलब है कि जैसे आपके आस पड़ोस में कोई भी आपके नेबरहुड है, इफ दे आर हैविंग द ट्रैवलिंग नेचर और फाइटिंग नेचर एंड यू आर फाइटिंग विद देम और दे आर फाइटिंग विद देम जस्ट इन द स्मॉल स्मॉल थिंग्स. जैसे आपने अपनी गाड़ी उधर की साइड पार्क कर दी तो कह देंगे आपने यहाँ का पार्क कर दी है तो मेरा रास्ता है, ये तो मेरा प्लेस है, हाउ कैन यू डू लाइक दिस? तो दैट विल कॉज द टेंशन इन योर माइंड. ड्यू टू दैट वी कैन से दैट वी आर नॉट द सोशली फिट. ओके? यस मैम. Any other one? अंशुल रिकॉर्डिंग बंद कर देना बेटा यदि कर रहे हो तो. Any other else who are having any doubt related to this? No one is there. So I am just going to end this meeting. Understand?